नैन्सी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन का पहला बड़ा रिएक्शन सामने आ गया है। चीन ने नेचुरल सैंड का एक्सपोर्ट रोक दिया है। ताइवान को नेचुरल सैंड अब नहीं देगा चीन, यह फैसला कर लिया गया है। आज से ही शुरू होनी थी नेचुरल सैंड की डिलीवरी और इसे अब रोक दिया गया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का यह बड़ा फैसला है जिसने डिलीवरी पर लगा दी है रोक। राठौर साहब, अब नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से ताइवान को फायदे क्या होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान शुरू हो गए। देखिए, नेचुरल सैंड की डिलीवरी ये बहुत ही छोटा सा है। मेरे ख्याल से ये चीज़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम आती होगी। इसके सब 就是安全，包括在美国的人民以及全世界人民的安全。第二项是经济，我们希望能够将繁荣拓及到全世界各地。第三项则是关于治理。Mr. Vice President, so many of the legislation and other initiatives that you mentioned were possible because of our members of this delegation. The chairman of the Foreign Affairs Committee in the House, Gregory Meeks, has been an ardent leader in terms of these human rights initiatives across the world, but in particular the ones that you mentioned. So again, our purpose are the three purposes I said, but in doing so, we want to increase interparliamentary cooperation and dialogue. And we do so at a time when our president has put forth an Asian Pacific initiative, which we support, and we want to be specific in terms of how we work with Taiwan in that regard. 副院长，您刚才特别提到了这个美国通过了许多支持人权的法案。 देखिए, नैन्सी पेलोसी की तरफ से बताने की कोशिश है कि ताइवान के लोगों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। दरअसल यही मैसेज देने की कोशिश अमेरिका की ये मानी जा रही है कि ताइवान के हम साथ हैं। और नैन्सी पेलोसी ताइपे पहुंचकर यही बताने की कोशिश कर रही हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि ताइवान के साथ, ताइवान के लोगों के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है और यही बातें नश्तर की तरह चुभ रही हैं चीन को। 但我们希望未来我们的国会之间能够有更多的互相的往来以及交流。那这个也正是我们的拜登总统他提出了关于这个 印太的相关的战略之后，我们也大力支持的一些具体的行动。In acknowledging Chairman Meeks's leadership in regard to so many of the initiatives you mentioned, I'm sure we'll have some discussion about that, and you'll hear directly from him. We come in friendship to Taiwan. We come in peace for the region, and our chair of the Veterans Affairs Committee, Mr. Takano, representing our veterans, understanding the value of peace and the avoidance of conflict. I'm sure that he will speak to us about that, but I want to salute him for his protection of our veterans, not just our veterans, but the veterans of all countries engaged in war. We talked about economy. And what do the translation first? Sorry, thank you. 刚才我们提到我们外委会 Mix 主席，他对于这个人权的法案在背后有许多的着力以及大力的倡议。那这个呢，他所做的这一切也反映了我们对于台湾的友谊以及对于和平的。 तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी को आप सुन रहे हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से अब इंटर पार्लियामेंटेरियन डायलॉग में भी इजाफा होना चाहिए और साथ ही एशिया पैसिफिक सपोर्ट का जिक्र करते हुए उन इनिशिएटिव्स की भी वो तारीफ कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर डिस्कशंस भी आने वाले वक्त में टेबल पर जरूर होंगी। 特别赞赏他对于在全世界对于这个退伍军人方面所做的各种的福利的支持，尤其不论是在美国或者是在全世界各地。 Thank you. We talked about the economy. Thank you for bringing up the CHIPS bill. All of these members were instrumental in passing that important legislation, which we think offers greater opportunity for U.S.-Taiwan economic cooperation. Here with us in that regard is the Vice Chair of the Ways and Means Committee. It was very instrumental in the passage of that, and she can share some thoughts about that process. She was with Microsoft. She is private sector oriented and visited Taiwan on many occasions, which I'm sure she'll share with us.
Congresswoman Susan Delbene, Vice Chair of the Ways and Means Committee. 那特别是刚才您提到的这个美国所通过的晶片法案，那 और इस बीच जिन इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ी देर पहले नैंसी पेलोसी ने कहा, उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बातचीत यहां ताइवान के साथ हो रही है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी, साथ ही जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर कन्फ्लिक्ट है वो भी जल्द से जल्द दूर किए जाएंगे। इस बीच उन्होंने प्रोटेक्शन को लेकर बात की, इकोनॉमी के हालात को लेकर बात की और उम्मीद जताई कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस बातचीत के बाद बन रही हैं, उससे आने वाले वक्त में फायदा जरूर होगा। Where security and economy come together, our distinguished member from Illinois, Mr. Christian Murphy, is a member of the Intelligence Committee, and he saw the connection between chips and national security, as well as other aspects of our cooperation security-wise. We'll hear from Mr. Christian Murphy. Thank you, Mr. Christian Murphy. 那当安全与这个经济要连接在一起的时候，这个就和我们来自伊利诺伊州的这个议员 Christian Northey 有相关了，因为他是和我们的情报委员会当中的成员，所以他的所负责的领域就是将这个晶片以及国安还有其他的领域共同结合。我相信等一下他也有很多意见。लोगों के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ है, ये तो बताया ही जा रहा है नैंसी पेलोसी की तरफ से, लेकिन आप देखिए नैंसी पेलोसी आर्थिक रिश्ते और मजबूत करने की बात कर रही हैं, यानी आने वाले वक्त में अमेरिका और ताइवान के बीच आर्थिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, साथ ही साथ लोकतंत्र के हम समर्थक हैं ताइवान में, यह भी कहा नैंसी पेलोसी ने। He also is a former member of the State Department. He's a diplomat, and so he's teaching us to speak more diplomatically. 那另外，如果是说这个所有的这个议题都要把它们连接在一起，包括不论是安全或者外交或者经济的领域的话，那我们来自 New Jersey 的这个 Andy Kim 的议员，他就能够扮演非常重要的角色。तो ताइवान के साथ आर्थिक रिश्तों के साथ साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर भी यहाँ पर वो स्टेटमेंट दे रही थी। हालांकि यहाँ पर इस बीच आपको बता दें, जो बात नैंसी पेलोसी कह रहे हैं उसे ट्रांसलेट करके इस बीच बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बातें अभी तक उन्होंने कही हैं कि किस तरीके से ताइवान के साथ हमेशा अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा है और इलाके में शांति के लिए ताइवान से दोस्ती पर भी उन्होंने जोर दिया। Our delegation has what we call heft. They have a view of economy and security and governance. They have knowledge of the issues. They think in a strategic way about how to work together. They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. 那透过刚才的这个介绍，相信这个副院长可以了解，今天我们所来的这个访谈是非常的有能力。 ताइवान और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती पर जोर देते हुए ये कहा कि ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी बातचीत हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा। 目的特别重要的也是要倾听各位的意见，以及向各位有所多多的学习。 In terms of governance, we commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance issue. We congratulate you for that. And as we continue to work together, we want you to know how proud we are of Sandra. She told me just to address her as Sandra, our director, and she has our confidence, and we're very proud of her leadership. 那在治理的方面，我们非常高興知道台灣是全世界最自由的 इश्यूज का यहाँ पर लगातार जिक्र किया जा रहा है और जिस मजबूती की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी के सपोर्ट की बात कर रही हैं नैंसी पेलोसी, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया that we are really proud to have certain relationships at every level with security and economic issues that you are facing, यानी बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है और एक क्लियर मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मैसेजिंग का अर्थ क्या है, इस बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच सुनते हैं कि अब मीडिया से मुखातिब होते हुए नैंसी पेलोसी की तरफ से और क्या-क्या कहा जा रहा है। 贡献，他是非常有能力以及非常这个卓越的一个领导者，我们非常骄傲由他代表美国政府在台湾为我们行事。 And so now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect
the planet from the climate crisis, how to accelerate and learn from you how you addressed the COVID crisis, how we advance respect for all of the people in our countries as we go forward. And again, we come in friendship. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. And with that, again, I thank you, Vice President Tsai, for your hospitality, for your kind words. Just go back to Tiananmen Square for a moment. That was bipartisan. It was over 30 years ago. It was bipartisan when we were on Tiananmen Square. And we were there specifically making the statement on human rights. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issue of dangerous technologies being transferred to rogue countries, to countries of concern. So for over the years, it's always been about security, economy, and governance. So we look forward to our conversation, and I think we're right on time. 那接下来我会非常期待我们 पेलोसी साफ तौर पर यह कहते हुए कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं ताइवान में और अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। आने वाले वक्त में आर्थिक रिश्तों को भी नए मकाम पर पहुंचाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट साई और ताइवान के लोगों के जज्बे को सलाम किया है नैन्सी पेलोसी ने। 全世界推动以及尊重人权。那特别感谢台湾所展现的友谊，以及我们希望台湾能够在全世界受到 खड़े हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह बताने की कोशिश बार बार की गई है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये जो पॉलिसी है ये पुरानी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर है, नैन्सी पेलोसी का ताइपे पहुंचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऐसे वक्त में ताइपे में होते हुए देख रहे हैं जब ताइवान के चारों ओर चीनी सेना का जमावड़ा है। कह सकते हैं आप चीनी सेना ने, चीनी वायुयानों ने ताइवान को पूरी तरह से घेर रखा है और ऐसे वक्त में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 国安的议题还有经济以及治理人权都是息息相关的。那我想我们时间好像差不多，我就先说到这里。非常感谢副院长，谢谢您。 Mr. Vice President, it would be, Madam Speaker, I think now the media will withdraw from the room, will excuse themselves, and then we will have closed door session. 对啊，讲了，我讲了，讲了。 पेलोसी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि किस तरीके से ताइवान के साथ मजबूती से अमेरिका रहा है। देवनाथ सर, अभी तक के संबोधन को आप क्या देखते हैं? कितना मायने रखता है अमेरिका का सपोर्ट ताइवान के लिए, जिस पर बार बार नैन्सी पेलोसी जोर देते हुए नजर आई? नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है बहुत क्लियर एम के साथ है। वह दुनिया को और ताइवान के लोगों को और ताइवान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को दिखाना चाहती हैं कि कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा अमेरिका और अमेरिका के साथी देश ताइवान के साथ खड़े हैं। वह ताइवान को अभय दान देना चाहती हैं, यानी वो ताइवान को बता रही हैं अपने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि आप चाइना से डरिए मत। चीन भले ही आपको कितनी भी धमकियां देता रहे, ताइवान को उससे डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि चीन अपने पूरे रिसोर्सेस को भी अगर ताइवान पर लगाएगा फिर भी चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका वरन पूरा डेमोक्रेटिक अभी तक के इनके संबोधन में सर अमेरिका की सॉलिडारिटी ताइवानियंस के साथ जो नजर आ रही है वो शब्दों के जरिए भी नैन्सी पेलोसी ने सामने रखी है। मैसेजिंग चाइना को जरूर की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि इस स्थिति में अभी भी मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या डायरेक्ट सवाल चीन को लेकर उनके सामने रखा जाएगा, इस पर भी हमारी नजर है।